He's a rebel basically. He's a guy who understands the system and उसने घोट के पी ली है, जानता है कि अभी एक ही तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है. A very sharp human being, and Govind is a guy who knows what to do in a period like this and how to get his job done. And the job getting done might be unorthodox, might be not very pleasant, but he gets it done. And he's too sharp. He's in chess, he would be about 10 steps ahead of everybody. He's that kind of a man. Do you have any memories of the emergency? Do you have any memories of the emergency? I guess you were about 9 or 10. Do you have any Memories of the emergency, personal memories. Emergency, I was too small then. 9 or 10? All I knew was that my parents, I mean through my parents, there as a kid you can sense fear, you can sense love, you can sense happiness very easily. So as a kid, yes, I did sense that element of fear in the atmosphere around. So if it was cold, it was slightly spine chilling. If it was hot, it was like burning the skin, kind of a feeling. Yeah. Talking about the kind of roles you do, you are a brilliant actor, and the way you're answering the questions, you have a very different and brilliant approach. Do you apply that approach while choosing your roles, or these kind of unusual roles, they choose you? Madam, I am like that only. I cannot analyze my own self. It's for you to do that. So if you ask me questions about myself and as Shakespeare has once said very famously, the eye sees not itself but by reflection. Okay? So I can't see my own eye. You have to tell me. She's the Shiv's third eye. So questions about my persona, I have no idea. I'm like that only, as I said. But yeah, as far as choosing films are concerned, it's much like love. You don't know the reason as to why you've fallen in love, right? You don't measure the nose or measure the eyes, or you don't go about doing that. So something like that with every script that I read. When I read it, it sort of gets you into a bond with it, and I go in and do it. And sometimes I do it for a few hundred billion reasons, a few 100,000 reasons. Sometimes I don't do it for that kind of reason as well. So yeah. Keerti, can you please share something about your character in the film? I just now did, ma'am. Keerti. Yeah, we have two KKs in the house. Well, I am playing this girl called Meena in the film. She's a middle class girl of those times. तो I'm sure आज के time से काफ़ी अलग होती होगी in terms of the restrictions and the what do you call the opposite Control. the control that she lives with was much more at those times, and she has had her past, a past which is not so pleasant, and like most of us, she's tried to run away from it and make something else of a future that she believes in, and she is desperate. She is brought out this side to her which all of us have in us, लेकिन हम उसको use तभी करते हैं जब हमें desperation होता है आज़ादी का, freedom का, सब कुछ तोड़ के छोड़ के भागने का. So you see Meena in the film in that phase of her life where she doesn't give a shit about anybody, and no bad words. She just wants to get out of this country. I mean, get out of this country, especially in those times where I don't think it was so much about what was going on in the country at that time, the fact that it was emergency and stuff, but uski zindagi mein emergency lagi hui thi, and she just had to get out of that. So Meena is a very nice combination of this sweet, innocent girl, which with a side to her, which is She's a rebel. The rebel, yeah. No, the rebel who just wants to get out, no matter what, at no matter what cost. Yeah. It was wonderful. It's I mean, it was an honor. It was a pleasure. I think Mr. Bachchan
it's just, you know, when you meet him, when you work with him, you realize he is what he is because of, you know, how he is. Like on the set, he is the most professional person around, the most comfortable actor to work with. He makes sure you are comfortable. He is there for you to give you cues, to rehearse with you no matter how many times it is. And all I can say is it's been a beautiful journey shooting for Pink with everyone and Mr. Bachchan around. And yeah, I hope something really good comes out of that. Ever discussed this film with him? You know, because during emergency, Shole was ruthlessly censored. So just नहीं एक्चुअली उनसे इस बात पे बात करने का मौका नहीं मिला. I'm in fact, I mean, I'm meeting him today for Teen ka screening, but I don't think I'll really talk about Emergency and Sholay. No. And I wanted to ask you, what do you would you say that the representation of the armed forces is adequate in Indian cinema? What do you think about the representation of Indian forces in the in cinema today? You know, I mean, the kind of films we make, unfortunately, I would say, there is a lot of cinematic liberty that is taken. And it's disappointing most of the times, I would say. I mean, I think Lakshya was one film where they tried to stay kind of very true to what defense is like. But most of the times we mess up. Like we don't pay attention to, you know, the details of the uniforms, the ranks, how they should be, what they should look like. So yeah, not very adequately and very happy about that. All right, so we are here to quickly take a group photograph. Let's have all the casts right here at the center. It's going to be easier for the media as well. Let's make it a little easy for them. You're working in Sann.
सन 75 वॉज क्वाइट अ मेमोरेबल जर्नी। एक तो ऐसा है कि उस इरा को क्रिएट करने में थोड़ी तकलीफ होती है, जो हम सब ने उठाई है, और जहाँ तक कहानी है और जिस तरह से डायरेक्टर ने उसको पेश किया, बड़ा मज़ेदार तरीके से पेश किया। थ्रिलर स्टोरी 75 के ज़माने का है, तो बैकड्रॉप में इमरजेंसी का एक फीलिंग सा है, उसके आगे एक कहानी चलती है। और जहाँ तक और जो जब भी हमने कोई भी सीन्स डिवाइस किए हैं, जिस एक्चुअली क्या है ना, एक फिल्म में काम करने का मज़ा बहुत कुछ निर्भर करता है डायरेक्टर पे, और यू नो जो आपके संगत में है लोग, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस फिल्म में। What is the best part about the film? बेस्ट पार्ट यही है जो मैंने कहा कि मतलब जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती। लोग अपने आप इंडिविजुअल ईगो पे एक फिल्में बनाते हैं, हम उससे परे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भैया जितना ऑथेंटिक हो मामला उतना अच्छा है। And best thing about the Govind character? गोविंद वही बंदा है जो एक जान गया है सिस्टम, उस ज़माने के सिस्टम को, इमरजेंसी के समय वो जान गया है कि अगर इससे निकलना है तो एक अलग तरीके से इसको डील करना होगा, और उस रास्ते पे निकल जाता है। तो उसको पता है कि ये जो चीज़ आने वाली है इस इमरजेंसी पीरियड में, ये जो पैकेज आने वाला है, अगर ये आ गया तो हाथ में चला गया तो सत्यानाश हो जाएगा। Do you think can this film create a box office successful? वो तो आपको खैर वो तो जनता के ऊपर है, वो तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ अच्छी फिल्में बना सकते हैं और अच्छे परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, बाकी जनता के ऊपर है जितनी उनकी क्षमता है दिमाग की या दिल की, उस पर निर्भर करें। Because earlier also the film like Bombay Velvet and Action Replay has done well on a box office. So I believe it will do well in the first place. Thank you. Experience working in such a film. आप आई एम श्योर जिससे भी सवाल पूछते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत मज़ा आया यार, बट मुझे एक्चुअली सच में मज़ा आया, बिकॉज सबसे पहले कि ये फिल्म 70s की है, तो इट वाज वेरी नाइस 2015 से सीधा 75 में ट्रांसफ़र हो जाना, विद द लुक, विद द हेयर, विद मेकअप, विद द काइंड ऑफ सेट्स वी हैड, तो वो दैट इटसेल्फ वाज वेरी एक्साइटिंग। उसके अलावा जिस तरह की ये फिल्म है, थोड़ी मुश्किल फिल्म है, इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर स्पेस, तो मैंने फिल्म से पहले कभी इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हम में से कोई भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, एंड सो कभी इतना ध्यान दिया नहीं कि इमरजेंसी क्या, कभी सुना था नहीं सुना था, बट दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली लव अबाउट फिल्म्स ऑल्सो, कि आप जब अलग अलग फिल्में करते हैं, सब्जेक्ट्स पे करते हैं, तो आपको चीज़ें पता चलती हैं जो शायद आप नॉर्मल लाइफ में आप समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप अ लिटिल अबाउट इमरजेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या था नहीं था, एंड फिल्म में यू नो वी हैव सम वेरी गुड एक्टर्स लाइक के एंड रवेश, टॉम ऑल्टर, एवरीवन, एंड फिल्म एज आई सेड कि थोड़ी मुश्किल थी, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही फिर होती है, करनी पड़ती है, एंड आई थिंक आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर जो सिर्फ वाइट नहीं है, उसमें ग्रे शेड्स भी हैं, तो मेरे लिए बहुत एक अलग किरदार प्ले करना, 70s का प्ले करना, ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वी वर शूटिंग इन लखनऊ फॉर अबाउट 40 days, तो लखनऊ पूरा एक्सप्लोर करना, यू नो, आई थिंक इट वाज, आई वुड रियली चेरिश द होल एक्सपीरियंस। Does the role was challenging for you? See, every role has its own challenges, as I said. But मज़ा भी मुझे तभी आता है जब कुछ challenging हो. It's very easy to, it's very simple to just play and you know have fun. But for me, having fun is about doing these kind of challenging roles. So as I said, 70s का पूरा look था. So I went through the उस वक्त के ज़माने की my mom's pictures and जो उस वक्त की जो heroines होती थी. But चूँकि मैं फिल्म में हीरोइन नहीं प्ले कर रही हूँ, मैं बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास उस वक्त की लड़की प्ले कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक जाना था. सो मुझे बहुत मज़ा आया. वो साड़ियाँ पहन के, वो टाइट सूट्स पहन के, बेल बॉटम्स पहन के, एंड एज आई सेड कि कैरेक्टर में जिस तरह के शेड्स थे, इट्स ऑलवेज नाइस टू एक्सप्लोर मोर एंड सी कि आप क्या कर सकते हैं.
थैंकफुली मेरे डायरेक्टर और मेरे को एक्टर्स वाला हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप्स भी की जो मेरे ख्याल से ज़रूरी होती हैं इस तरह की फिल्में करने से पहले. सो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. And how was you working with KK? के के साथ मैं अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग नहीं कर पाई. आई जस्ट हैव वन शॉट विद के वेयर वो गोली मारते हैं मुझे. ही जस्ट शूट्स. सो उसके अलावा मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला और ये मेरी एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई. सो आई एम रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इनके साथ एक प्रॉपर फिल्म करूं जहां दोनों के साथ में हो. So, do you think can this film create a magic again for you to become a star? आई डोंट नो अबाउट दैट. मैं ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकती. मैं फिल्म करने से पहले स्क्रिप्ट साइन ऑन करने से पहले ये दिमाग में होता है कि अरे यार ये फिल्म मुझे स्टार बनाएगी क्या. दैट्स समथिंग. आई एम एन एक्टर. आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम एन एक्टर. और मैं एक्टर होने के नाते बस अच्छा काम करने की कोशिश कर सकती हूँ. और स्टार होंगी नहीं होंगी ये सब तो आई थिंक इट्स नॉट इन माई हैंड्स. लास्ट क्वेश्चन, फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप ट्रेलर देखिए. आज रिलीज़ हुआ है ट्रेलर और बहुत जल्द आप सबके आजकल फेसबुक ट्विटर सोशल मीडिया इज़ सो एक्टिव दीज डेज. तो आप लोगों के सबके पास आप मोबाइल फ़ोन्स पर देख सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर. इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. ऐसा कुछ इमरजेंसी के बारे में जैसा मैंने कहा आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा आजकल के हमारे जनरेशन में. सो डू चेक इट आउट. समथिंग डिफरेंट. देयर आर सम नाइस परफॉर्मेंसेस. इट्स अ गुड फिल्म दैट्स मेड and just check it out. You will probably enjoy a different cinematic experience. So do go and watch it. The film releases on 1st July 2016. Please go and watch it if you really like the trailer. Thank you. Thank you.